Hello students, today we will start examples of Taylor's theorem. बेटा वो मैं in my last video बेटा prove the Taylor theorem of two variables in form of Maclaurin form and in the power of x minus a y minus b. बेटा we prove this. बेटा मैं लिंक भी दूँ उस वीडियो का बेटा प्लीज देखो बेटा फर्स्ट एग्जांपल की है एक्सपेंड e दी पावर x into sin y in the powers of x and y. बेटा in the power of x and y this one is a Maclaurin's theorem or in Maclaurin's form. बेटा ओके इसी बेटा we know that let first थर्ड डिग्री तक बेटा एक्सपेंड करना है f x y equal to a dx into sin y. बेटा expand in the power of x and y for as the term for third degree बेटा. Let function of x y बेटा consider कर ले. We know that बेटा मैं लिखने लग गया Maclaurin theorem. We know that in power of x and y क्या ना बेटा जो x and y दी power जिन्हें तक की आएगी बेटा Maclaurin form f 0 plus x del upon del x plus y del upon del y f 0 बेटा at plus 1 by 2 factorial x del upon del x y del upon del y the whole square f 0 plus 1 by 3 factorial x del upon del x plus y del upon del y the cube at the f 0 up to so क्योंकि आपको अपना बेटा थर्ड डिग्री तक ही जाना है. सो दिस वन इक्वल टू f 0 प्लस x del f अपॉन del x at 0 प्लस y del f x del upon del x plus y del upon del y at f 0 plus 1 upon 2 factorial x square del square upon del x square y square del square upon del y square 2xy del square del square upon del x del y at f 0 plus 1 by 3 factorial into बेटा एक्सपेंड कर रहे हैं x क्यूब del क्यूब on del x क्यूब प्लस y क्यूब del क्यूब on del y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y del स्क्वायर del क्यूब ओके del क्यूब बेटा 3xy into x a plus b यही होता ना बेटा. So we have 3x square y del square del x square del y plus 3x y square del cube upon del x del y square into f at 0 बेटा ये okay. So first find f 0 बेटा f 0 x भी 0 बेटा y भी 0 e भी 0 sin 0 बेटा 0 then del f upon del x first बेटा is the derivative okay with respect to x e दी x sin y ठीक है बेटा at 0 del f so बेटा at 0 del f upon del x at 0 साइन 0 बेटा 0 ओके एट 0 ते अपन आना कैलकुलेट करी जावांगे बेटा del f upon del y ओके e दी x ठीक है पुत्र sin y दा पुत्र cos सो वी हैव del f upon del y एट 0 दिस वन इक्वल टू e दी 0 1 4 0 1 बेटा ओके पुत्र del स्क्वायर f upon del x स्क्वायर बेटा ये दोनों हो गए दिस टर्म ठीक है एट एक्स वाई है पुत्र इधर एट 0 बेटा del स्क्वायर f बेटा लिख देना मैं f
xy, this one equal to e the x sin y, and this one f0 0, this one 0. Okay beta, this side in xy form, in the function of x and y, and this one at point 0 0. Okay beta, with respect to x beta, this one e the x दोबारा बेटा with respect to x करना है, sin y की है तो constant, so del square f upon del x square at 0 0, this one equal to 0, then del square f upon del y square, okay, minus e the x cos y da beta sin y, okay, then del square f upon del y square at 0 0, this one 0. Okay beta, next del square f upon del x del y, ठीक है, this one y नो बेटा x ना e the x cos y, then this one equal to at 0 0, this one equal to e the 0 1 cos 0 1. Next del square f upon del cube beta, del cube f upon del x cube beta x cube, so e the power x sin y, this one equal to beta at 0 0 0. Next del cube f upon del y cube beta y cube minus e the x cos y. Okay beta, again कितना आ गया cos y, so this one equal to at 0 0, cos 0 beta 1 minus 1. Next del cube f upon del x square del y, beta x with respect to y, this one equal to e the x, मैं क्या से ना बेटा del q f upon del y del x cube वैल्यू सेम आएगी बेटा, so this one equal to cos y, so del cube f upon del x square del y at 0 0, again 1, ठीक है बेटा, again 1. Last one बेटा del cube f upon del x del y square, बेटा y square with respect to x, this one equal to minus e the x sin y, this one equal to 0, del cube f upon del x del y square at 0 0 sin 0 beta 0. Beta, so we put the value at this one. So fxy equal to f0 0 beta 0 plus del f upon del x 0, del f upon del y 1, 0 plus y, okay. Next 0 0, and this one is 1 1 on 2, 0 0 2x y. Okay beta, next cube 1 by 3 factorial, then 0, this one minus 1, okay, and x k y, this one is a 1 and 0. So this one is a अपनी third term तक ही आना सी बेटा, third degree तक क्या सी, so this one is a required solution. Okay beta, next example. Beta, next example, use Taylor theorem to expand x square into y plus 3y minus 2 in the power of x minus 1 and y plus 2. Beta, in my last video beta, we proved this result if equation in the power of x minus a and y minus b. We know that beta मैं result prove किया थी. First beta let
function of x y, x square y plus 3y minus 2. Beta, we know that when in the power of x minus a, Taylor theorem, in the power of x minus a, y minus b, function of xy equal to function of ab plus x minus a into del upon del x, y minus b del upon del y, function of ab plus 1 upon 2 factorial, 1 upon 2 factorial x minus a del upon del x, y minus b del upon del y the square, function of a and b. Next 1 by 3 factorial x minus a del upon del x. बेटे यूज करते सी जो अपने इन द पावर ऑफ x minus a, y minus b, this one is form to leave this. So expand this function of ab plus x minus a del upon del x, y minus b del upon del y, function of ab plus 1 by 2 factorial 2 हो गया बेटा, x minus a the whole square del square upon del x square, y minus b the whole square del square upon del y square plus 2xy plus 2 x minus a y minus b del square upon del x del y, okay, plus 1/6 x minus a the cube del cube upon del x cube plus y minus b the whole cube del cube upon del y cube plus 3 x minus a the square y minus b del cube upon del x square del y plus 3 x minus a y minus b the square del cube upon del x del y cube, function of ab plus this one. Okay, beta we use this. So fxy, beta और कंपेयर करिए इसमें, x minus a, so a is equal to 1, b is equal to minus 2, because compare with x minus a, y minus b is, so a equal to -1 and b equal to -2. Okay beta, x minus a, y minus b. So function of xy, x square y plus 3y minus 2 at 1 minus 2 we have 1 minus 2 1 minus 2 minus 6 minus 2. Okay beta, this one is equal to minus 10. फर्स्ट टर्म आ गई बेटा आपके लगे, कितनी वैल्यू आई है बेटा -10. देन नेक्स्ट टर्म बेटा with respect to x derivative at xy, this one equal to 2xy. Okay beta, at 1 minus 2 1 minus 2, this one is a -4, del f upon del y beta, x square plus 3, so f1 minus 2 at del f upon del x at 1 minus 2, this one is -4. Okay, del f upon del y at 1 minus 2, 1 plus 3 4. Okay, del square f upon del x square, del square f upon del x square. Okay, with respect to beta x, this one is a 2y. So del f upon del square f upon del x square at 1 minus 2, this one is a -4. Okay beta, del square f upon del y square 0,
del square f upon del y square at 1 minus 2 0 बेटा. Next del square f upon del cube x cube बेटा 0. So del cube f upon del x cube at 1 minus 2 0. Okay बेटा. Next del cube f upon del y cube. This one is 0. बेटा next del cube f upon del x square del y. बेटा x square नु y now. This one equal to 2. Del cube f upon del x square del y at 1 minus 2. This one is 2. Del cube f upon del x del y square. बेटा y square with respect to x 0. So बेटा you know बेटा नेक्स्ट कोई भी टर्म बेटा अगे सारे 0 बन जाएंगे. रीजन क्योंकि अगे डेरिवेटिव सारे कांस्टेंट हो गए. आ देखो 4 टर्म्स कांस्टेंट. नेक्स्ट डेरिवेटिव कराएंगे बेटा 0. सो थर्ड ऑर्डर तक ही अपने चलना है. So beta put the value in this form beta. f x y equal to f a b कितना सी बेटा 1 minus 2. This one equal to minus 10 plus x minus a कितना बेटा 1. x minus 1 del f upon del x minus 4. Okay. y plus 2. Okay. Del f upon del y. This one is a 4. Plus 1 by 2 factorial. X minus 1 the whole square. Del square f upon del x square. This one is minus 4. Plus y minus b the whole square. Okay. Del square f upon del y square 0 plus 2x minus 1 y plus 2 del square f upon del x del y. सॉरी रह गया बेटा ये प्रूव कर देना. del square f upon del x del y. बेटा y with respect to x 2x पूरे कितने आ गए बेटा. at a की वैल्यू कितनी है 1 2 आ गया. Okay, plus 1 by 3 factorial 6 x minus 1 the whole cube 0 plus y minus b the whole cube 0 plus 3x square y 2 6 x minus 1 the whole square y plus 2 plus last 0. Okay beta. So we have minus 10 plus 4 minus x plus 1 plus y plus 2 कितना आ गया बेटा plus 3. Okay बेटा. minus 2 x minus 1 the whole square. ठीक है बेटा. minus x minus 1 y plus 2 प्लस 6 ना 6 कैंसिल हो गया बेटा. x minus 1 the square y plus 2. So this one is a required solution. So बेटा ए सी बेटा आप लगे एग्जांपल्स ऑफ टेलर थ्योरम. मैं इस तो नेक्स्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम जिस ਦੇ ਵਿੱਚ अप्रोक्सीमेट अपने एरर कैलकुलेट करने बेटा आप डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.